आज हम लोग मोशन चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे। इसका मतलब आज का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। इन फिजिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज़ and second is vector quantity. Now we define the scalar quantity. A quantity which has only magnitude but not direction is called scalar quantities. इसका अर्थ हुआ वह क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो उसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, etc. Second is vector quantities. A quantity which has both magnitude and direction is called vector quantities. इसका अर्थ हुआ वह क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, etc. नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं और समझेंगे। अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट्स। स्केलर क्वांटिटी को नंबर के साथ उसके मात्रक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर मीन्स मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट्स मीन्स सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, दिस इज द यूनिट। केजी, मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट। Therefore, the number represent the magnitude of the quantity and unit represent and proper units represent meter denoted by small m, kilogram denoted by kg, meter per second, centimeter, etc. represent the unit. For example, a stone has a mass of 2 kg. एक स्टोन है जिसका मास 2 kg है। In literature, 2 kg is a scalar quantity because this 2 represent the magnitude, this kg represent the proper unit. Magnitude with proper unit is called a scalar quantity. So 2 kg is a scalar quantity. This is the first example. Now in second example, length of cloth is 5 meter. Since the length of cloth is 5 meter, this 5 meter is a scalar quantity because the 5 is a number and
So the number represent the magnitude. So we write here 5 is the magnitude, m is the unit of length, means this is the unit, proper unit है. Therefore 5 meter is a scalar quantity. Third example is speed of car is 10 meter per second. This 10 meter per second is a scalar quantity because this 10 is a number and this number represents the magnitude. This is the unit of speed, so this is a proper unit. Magnitude with proper unit is called scalar quantity. So 10 meter per second is a scalar quantity. That's all. Thank you. Next topic है representation of a vector quantity. Vector quantity का representation. A vector quantity can be represented by a number with proper units and direction. इसका अर्थ हुआ वेक्टर क्वांटिटी को नंबर के साथ प्रॉपर यूनिट होना चाहिए और उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, तब वह रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर क्वांटिटी को. नंबर भी होना चाहिए और उसके साथ प्रॉपर यूनिट भी होना चाहिए और उसके साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, तब वह रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर क्वांटिटी को. नंबर्स मीन्स मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट मीन्स किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर, किलोमीटर, etc. are proper units. And a direction represent north, east, west, etc. So we write a number represent the magnitude of the quantity. Proper unit represent kilometer per hour, meter per second, meter, kilometer, etc. And a direction represent east, west, north, south, etc. For example, first example is a velocity of a car is 40 km per hour towards east. In this example, the velocity of a car is 40 km towards east. Right here 40 km per hour towards east. This 40 is a number represent the magnitude. Kilometer per hour is a proper unit. Towards east, east denoting the direction, so towards east is a direction. So 40 km per hour towards east is a vector quantity because it has magnitude with proper unit and direction. Now in second example, the velocity of a motorcycle is 30 meter per second towards north. In this example, the velocity of a motorcycle is 30 meter per second towards north. Right here 30 meter per second towards north. This 30 represent the number means magnitude. Meter per second represent proper unit, and towards north represent direction. North denotes the direction.
So 30 meter per second towards north is a vector quantity because it has magnitude with proper unit and direction. Thank you.